नमस्ते बिटिया। नमस्ते बिटिया, खुश रहो बिटिया। I JVN Dr. Namrata Nandwana, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science of JYOTI VIDYAPEETH, Women's University, Jaipur. I had discussed about in previous session about ankylosing spondylitis, introduction of ankylosing spondylitis, etiology of ankylosing spondylitis and pathogenesis. Now, site of affection of ankylosing spondylitis. Today we will discuss about ankylosing spondylitis and site of affection, clinical feature, investigation, management. Now start site of affection. Site of affection: sacroiliac joint, intervertebral joints, brachial joints, costovertebral joints, coxofemoral joints means hip joint, knee and ankle joint. मीन्स जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिसीज़ है वो मेनली सैक्रोइलिक जॉइंट को अफेक्ट करेगी, इंटरवर्टिबल जॉइंट को करेगी, ब्रेकियल जॉइंट, कॉस्टोवर्टिब्रल, कॉक्सोफेमोरल एंड नी एंड एंकल जॉइंट. This one, sacroiliac joint, coxofemoral, brachial joint and costovertebral joint. Now, clinical feature of ankylosing spondylitis. The initial symptom is typically a dull pain that is insidious in onset. Insidious in onset means मतलब अचानक होना, सडन होना. ग्रेजुअल ऑनसेट मतलब धीरे धीरे होना. तो डल पेन होगा, इंसिडियस इन ऑनसेट. द पेन इज जनरली फेल्ट डीप इन बटक and or in the lower lumbar region and is accompanied by morning stiffness in the same area that lasts for a few hours and improve with activity and return with inactivity. एक्टिविटी के साथ में इम्प्रूव होगा, जैसे ही एक्टिविटी बंद करी वो पेन रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. एंड मॉर्निंग स्टिफनेस मोर प्रोमिनेंट रहेगी, लास्ट फॉर अ few hours. The pain become persistent and bilateral within a few months and usually worse at night. नाइट में पेन वर्स होगा, persistent रहेगा and bilateral रहेगा. Now in advanced cases there is loss of spinal mobility with restrictions of flexion. स्पाइन मोबिलिटी लॉस होने लगेगी इन एडवांस केस में. फ्लेक्शन का मूवमेंट बंद हो जाएगा, एक्सटेंशन होगा लंबर स्पाइन का एंड एक्सपेंशन होगा चेस्ट का. ठीक है. मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज न्यू बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑस्टोफाइट्स एंड सिंडिस्नोफाइट्स. That is bamboo spine, which is repeated process of healing and bone formation leading to spinal syndesmophytes, then is bone bridge. पहले बैम्बो स्पाइन होगा, फिर अगर इसका रिपीटेड हीलिंग नहीं हो पाएगी या फिर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर एंड में स्पाइनल सिंडेस्मोफाइट्स बनेंगे, मतलब एक बोन ब्रिज बन जाएगा. There are several extra-articular manifestations. Extra-articular manifestations मतलब अदर ऑर्गन्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है. लाइक एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस, inflammatory bowel disease, aortic insufficiency, etc. Now, physical findings of ankylosing spondylitis. As the disease advances upwards, the back motion become limited. Restrictions हो जाएंगे. The normal lumbar curve get flattened and thoracic curve become exaggerated, means expansion. Chest expansion is limited. The following sign appear.
loss of lumbar lordosis and increased kyphosis. lumbar lordosis तो लॉस होगा, kyphosis बढ़ जाएगा, chest expansion बढ़ जाएगा. Loss of spinal mobility with limitation of anterior lateral flexion and extension of lumbar spine and chest expansion. This is due to bony ankylosis and muscle spasm secondary to pain and inflammation. Now, pain in the sacroiliac joint may be elicited either by direct pressure or with maneuver that stress the joint. Tenderness on palpation is common at the paraspinal region with paraspinal muscle spasm. Now, this picture नॉर्मल एनाटॉमी है जिसमें जो स्पाइन है वो एस कर्व में दिख रही है एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नॉर्मल का एस स्पाइन जो है कर्व वो क्या हो गया, लॉस हो गया है और एक बोन ब्रिज बन गई है, रिजिडिटी डेवलप हो गई है. ठीक है, वर्टिबल कॉलम जो है उसका स्पेस नैरो हो गया है. ठीक है, और वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो गए. नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. स्पाइनल फ्रैक्चर विद माइनर ट्रॉमा. स्पाइनल फ्रैक्चर हो सकता है माइनर ट्रॉमा के साथ में. कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम डेवलप हो सकता है. पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है. एओर्टिक insufficiency leading to congestive heart failure because extra manifestations appear हो रहे हैं. एमाइलोडोसिस हो सकता है. Now investigation of ankylosing spondylitis. The diagnosis of ankylosing spondylitis before the occurrence of irreversible damage is difficult. Several years may pass between onset of symptom and definite diagnosis. This is unfortunate as earlier diagnosis might potentially reduce the crippling effect that can occur. Lab test. No laboratory test is diagnostic, although HLA-B27 जो कि genetic marker gene present more than 90% with ankylosing spondylitis. ESR, CRP reactive protein and serum IgA often elevated in ankylosing spondylitis patient. जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है वहाँ पे ESR and CRP रेज्ड होंगे. Mild normocytic normochromic anemia may be present. Now radiological investigations, X-ray or MRI of lumbar spine and pelvis. Sacroiliitis is a hallmark of disease. Early stage में as the disease progress, sacroiliac joint may fuse. The bony ankylosis appear. The spine shows syndesmophytes that grow between the margin of vertebra. Syndesmophyte दिखेंगे and bamboo spine दिखेगा. This picture seen in normal vertebra and ankylosing vertebra. ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो रहे हैं जिसको सिंडेस्मोफाइट्स बोल रहे हैं और बोन ब्रिज हो रहा है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. शॉबर टेस्ट. Currently modified New York criteria are widely used for diagnosis. These consist of a history of inflammation, back pain, age of onset below 40, insidious onset, duration more than 3 months, morning stiffness, improvement with exercise or activity, limitation of movement of the lumbar spine in both sagittal and frontal planes. शॉबर टेस्ट. व्हाट इज शॉबर टेस्ट? शॉबर टेस्ट ऐसे करेंगे, पेशेंट को डाउन, पेशेंट को बोलेंगे कर्व पोजीशन में झुको. L5 वर्टिब्रा से 10 सेंटीमीटर अबव मार्किंग करनी है एंड 5 सेंटीमीटर बिलो.
इफ मोर देन 20 सेंटीमीटर आता है तो वो नॉर्मल है, अगर लेस देन 20 सेंटीमीटर है तो शोबर टेस्ट पॉजिटिव है। लिमिटेड चेस्ट एक्सपेंशन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एज एंड सेक्स। डेफिनेटिव रेडियोग्राफिक सैक्रोलाइटिस ट्रीटमेंट में NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, डीमार्ट्स, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनिबिटर्स, फिजियोथेरेपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट में ऑस्टियोटमी, आर्थ्रोप्लास्टी। नाउ होम्योपैथिक मैनेजमेंट, एस्क्युलस हिपोकास्टम, सिमिसिफ्यूगा, colchicum, butyricum acidum, viscum album, bambusa, arundinacea. These medicines are very good medicine for ankylosing spondylitis. Thank you.